हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम जानेंगे गूगल मैप से कुछ छुपे हुए ट्रिक्स जो हमें हमारी लाइफ बहुत इजी कर सकते हैं. सो वी आर द डी टीम. डी स्टैंड्स फॉर डिजिटल होम एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी. सो फाइंडिंग न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस स्टार्ट्स विद वर्किंग द मैप. आज के सेशन में वी लर्न हाउ टू शेयर योर लाइव लोकेशन, सेट राउट ऑप्शन, सेव मैप्स टू योर फोन, एक्सप्लोर एन एरिया इन स्ट्रीट व्यू एंड बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट टू गूगल मैप्स. सो आइए शुरू करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गूगल मैप्स. सो गूगल मैप्स इज अ सर्विस. इट्स अ mapping service provided by Google that offers satellite imagery, street maps, 360-degree views of street and real-time traffic conditions, and you can plan your routes by foot, car, or public transportation. So let's dive in. To share your location, you need to click on the Google icon on the top right corner of your screen. So let's go ahead and click it and click on location sharing. Now remember, in order to share your location, you need to turn on location settings on your phone. So you can do that by clicking this button, go back and then share your location. You have several options: WhatsApp, Gmail, chat, nearby, etc. to share location. You can also set the amount of time for which you want to share your location. तो आप बढ़ा घटा सकते हैं time को. And once you've done that, you will have to change the app specific settings. So you have to allow the app to access your location now. So go to settings, allow all time, go back, and then you can share your location. You can also manage your shared location by clicking on the shared location option, and you can stop sharing your location or copy the link and share that location sharing link with your friends and family. There are some cases where you cannot share your live location. This is when you have a business account और आपकी country restrict करती है live location share करना, या अगर आप बहुत छोटे हैं and Google places a restriction on the age that is required to share your location for it. Now the next hidden technique that we're gonna see is setting the route options. So let's check it out. So route options के लिए सबसे पहले एक destination select करूँगी मैं. Let's select Delhi Airport. Click on directions to get the directions. Choose a starting point. So let's say Chandni Chowk. Now ये वाला जो बार है इसमें you can select the mode of transportation that you want to use. So public transport के लिए let's select the first option of transport. This chunks down your path and you can select a chunk to see that chunk in maps. You can also click on the walking option to see कि walk करने में कितना time लगेगा, and finally ride hailing options like auto, ola, uber अगर आप वो use करना चाहते हैं. You can also switch your source and destination by clicking on this button. Now ये 3 dots जो हैं ये आपको additional options provide करते हैं. So let's click on driving and let's click on 3 dots. Route options avoid highway, avoid toll. Now you can also select add stop to add a stop. So let's say I want to add a police station as the stop. I can switch the ordering of these stops by clicking on this and moving it up and down. I can also click on cross to remove a stop. When you finally select what stops you need, you can click on done and select the final route that you want. अब रूट को प्रीव्यू करने के लिए आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू, तो ये आपको स्टार्टिंग से दिखाएगा कि किस तरीके से आपको जाना है. आपको स्पेशलाइज्ड व्यू मैप देखना है, जैसे सैटेलाइट व्यू देखना है या टेरेन व्यू देखना है, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. आप स्टेप्स क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देख सकते हैं. एंड यहाँ पे ये आपको ट्रैफिक का इंटेंसिटी का भी अंदाज़ा देता है, विच इज़ अ वेरी कूल फीचर आई फील लाइक. तो ये था राउट ऑप्शंस के बारे में. अगेन, to summarize what we learned in this, you can add, modify, remove stops. You can set specialized route options like avoid highway, avoid tolls. You can switch the source and destination, and you can change the view of the map that you want to select, like terrain, satellite view. So let's move on to the next thing, which is save maps. This is again a very cool feature because ये आपको maps ऑफलाइन एक्सेस करने का ऑप्शन देता है. तो अगर आपके पास वाईफाई इंटरनेट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है बट आपके पास ऑफलाइन मैप्स है तो भी आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं. सो टू हैव ऑफलाइन मैप्स, सबसे पहले सर्च बार में सर्च कीजिए कौन सी जगह आपको डाउनलोड करनी है. सो लेट्स सिलेक्ट लाइक विजयनगर इन इंदौर. नाउ क्योंकि विजयनगर एक स्मॉल एरिया है तो उसको क्लिक करो पहले एंड क्लिक ऑन डाउनलोड हियर. एंड डाउनलोड होने पर ये एक रीजन का मैप डाउनलोड करना चालू करेगा. इसे आप नोटिफिकेशन बार में भी देख सकते हैं.
Once this map is downloaded, इस मैप को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं in your save maps. Click on the area and you can search for anything within it. You can expand it. Now let's search again like विजयनगर, जो बड़ा मैप था उसमें हम विजयनगर स्पेसिफिक एरिया ढूंढ सकते हैं. वाईफाई ऑफ करके भी हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं. लाइक लेट्स से वी वांट टू सर्च फॉर छप्पन दुकान इन इंदौर इन दिस सेव मैप. तो छप्पन दुकान आप सर्च कीजिए एंड आपको उसका डायरेक्शंस भी मिल जाएगा. सो दिस इज़ रियली कूल बिकॉज अगर आपके पास वाईफाई या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, यू कैन स्टिल हैव your directions handy with you. So I really like and find this feature very useful. Now the next thing that we are going to look at is Street View. This is another very cool feature. अगर आप जगह explore करना चाहते हैं without being there, this is the feature that you're going to use. तो in order to use it, search for the place जिसका आपको street view देखना है. So let's say छप्पन दुकान का street view देखना है मुझे. Special icon. This shows you different types of terrain. So let's click on that and see that kind of terrains that are available. So हमारे पास satellite view है, we have terrain view, we also have like a COVID-19 info view that shows कि किस region में कितना COVID है. And then finally street view का अगर select करते हैं तो ये कुछ dots हमें दिखा रहा है. देखिए अगर आप देखेंगे blue dots है. These dots mean कि यहाँ का street view available है. So हम जाते हैं छप्पन दुकान के आसपास के एरिया पे एंड क्लिक ऑन द डॉट, तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा उधर का. सो दिस इज़ लाइक अ रियल व्यू. दिस इज़ रियल, इमर्सिव एंड वेरी रॉ. सो विदाउट गोइंग टू छप्पन दुकान आई कैन बी इन छप्पन दुकान, विच इज़ रियली कूल. So this is a cool feature that you can use. Now the next feature that we're going to look at is how you can contribute to Google Maps. So you can contribute to Google Maps by going to a location that you want to contribute for. So let's say Arches National Park. This is a really cool national park in US. Do check it out. इसके काफ़ी cool pictures हैं. Now इसमें आप अगर scroll करते हैं pictures पे, get an option of add pictures. तो अगर आप access देते हैं Google Maps को, Google को, तो आप photos भी upload कर सकते हैं. You can select on reviews and give like ratings or written reviews. Note that these reviews will be public, so कोई भी आपके नाम से review search कर सकता है and they'll know कि आपने ये review लिखा है. So I went to Arches National Park recently. I found this place really awesome. तो मैंने एक review छोड़ दिया इसके लिए, 5-star rating and amazing place. Now this review is posted and anyone can see that I've posted this review. They can read this review and you make a contribution to that place. You make a contribution to Google Maps. You can also select like specialized topics. तो जैसे newest review क्या है, highest lowest review क्या है. You can also select topics like you want to select crowds के बारे में लोगों ने क्या लिखा है, सनस्क्रीन ले जाना चाहिए कि नहीं अगर आप उसके बारे में वरीड हैं. तो ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो ब्राउज थ्रू द फोटोज़, यू कैन ब्राउज थ्रू द अपडेट्स सेक्शन. ये अपडेट सेक्शन के लिए नए अपडेट्स अगर आपको देखने हैं उसके लिए. सो दिस इज़ रियली कूल बिकॉज मोर यू कॉन्ट्रीब्यूट यू गेट पॉइंट्स. So like if you write a review, you get 10 points, and as you start contributing more, you become more established as a local guide, and Google आपको कुछ cool features का भी access देता है. So this is all about the awesome tips and tricks about Google Maps from our side. We hope you enjoyed this session. Thank you for watching. Like, share and subscribe.